So yes, Manish, first of Yes, all, sir. introduce yourself before entering into the snap of geotechnical engineering, as G you have interview in HPCL dated 12th 12th. January 2023, right? G sir. So introduce yourself, Manish. Sir, my name is Manish Kumar. I did my bachelor's from Delhi Technological University in civil engineering, and then after that I did my master's from IIT Roorkee in environmental management of rivers and lakes. I basically belong to Uttar Pradesh, Bijnor, but my education was done in Delhi. My father had a dream कि his children should get a good education. So I got all my education from Delhi until bachelor's. Then I got a chance to enroll in master's degree at IIT Roorkee. I went there and I pursued master's there. Ever since then, I am trying to uh, turn into some high PSU job. Okay, so when you graduate, Manish, I completed my bachelor's in 2018. and your masters, I I completed my master's in 2021. okay, your masters in which area? Environmental management of rivers and lakes. It is an Environmental inter management, management hmm, of rivers and lakes. rivers and lakes. It is Okay, an so what? interdisciplinary subject. Hmm. So what was your project in masters? Uh, in masters, my final project was I wanted to calculate the amount of energy that could be generated from waste collected all over IIT Roorkee. Okay, I did approximate analysis of that, and uh, I had a plan to um I had a plan to do a lab research, but I was unable to do so because of COVID hit. Because COVID hit the campus, and we were all forced to go home. So I did my proximate analysis using theories of other researchers. I calculated how much energy that could be generated from the total amount of waste that was generated in college. okay, fine. मनीष आप कहाँ से बिलोंग करते Sir, my birthplace in U is UP, हो? in Bijnor, is Bijnor in UP, and my schooling is in Delhi. ओके, आपका स्कूलिंग दिल्ली में हुआ है? जी sir. ठीक है. आपने ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम सुना होगा. जी sir. तो ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में आप क्या जानते हो? थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें. Sir, black cotton soil is very is black cotton soil has high content of morellite, because of which it has high plasticity, and ओके, it retains a high amount of water, and ओके, therefore it is black cotton soil is basically a clay soil with high amount of morellite. तो ये जो ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मॉन्ट मोरेनाइट इन द क्ले, so is it good for us or bad for us being a civil engineer? So being a civil engineer, it is not good for us, because high amount of morellite leads to high amount of water retention in clay. So we can't use it as a strong foundation for our buildings. Okay, anyone its purpose black cotton soil, that is positive point that I just want to know. Black cotton soil, positive point. Hmm, sorry sir, I can't remember. ओके मनीष, आपने नाम सुना होगा बेंटोनाइट जी क्ले सर. स्लरी.
है ना? तो ये क्या होता है? So bentonite is used as lubricant in uh, drilling operations. It is bentonite is basically obtained from volcanic ash. It is used for lubricants in drilling operations. That's all I know. It is also it has also very high higher than it has high content of montmorillonite, even higher than black cotton soil. Okay. Fine. So can you tell me what is effective stress? So effective stress is basically the stress that each particle of soil endures when a stress is loaded on it. Suppose a soil is there and it has water in it. If we load it with some pressure, then the amount of pressure on every particle is effective stress. It is basically total stress minus pore water pressure. That is effective stress. Okay. If we have to calculate the pore water pressure, then how you will calculate? If we have to calculate, sir, we will use a manometer. Yes, we will use a manometer. We will place it at the position. Sorry, sir, piezometer. Yes. Fine, Manish. So if I am writing this pore water pressure is nothing but gamma W into H. Say an example. So what is this H? H is height of rise of water in piezometer. Okay. Okay, fine, done. You must heard about this capillary rise. Yes, sir. Okay. So if you want this capillarity phenomenon is there in the soil mass or capillary fringe zone is there. Now what will happen to the effective stress? Will it increase or decrease? Effective stress. So can I take a minute? Yeah, sure. Sir, effective stress will increase. Why? Effective stress will increase. Why? Sir, because it will develop negative pore water pressure. And negative pore water pressure effective stress is basically total stress minus pore water pressure. Okay. If we have negative pore water pressure, then it will sum up and give up a higher value. Okay, fine. What is the formula to calculate this capillarity rise? 4T cos alpha divided by gamma W D. What is D here? D is rise. D, small d. D is rise or fall of the water in capillary tube. That is H, na? Sorry, sir. That must be diameter. Sorry. That is diameter. Diameter. D is diameter of tube. Or in case of soil, it is D10. We say D10, that is effective diameter of soil sample. How you came to know you have to use here D10? Sir, I read it somewhere. Okay, fine. Actually, so देखो मनीष आज सेशन थोड़ा छोटा ही हो पाएगा है ना, क्योंकि we have the
more candidates who are waiting in the waiting area. So okay, so I think right now I can give you feedback. जी सर. ब्लैक कॉटन सॉइल दैट वाज फाइन कि इसके अंदर मोंटमोरोनाइट प्रेजेंट होता है. जी. Okay, this is kind of the clay. We have a clay that is the when the particles passing through the 75 micron. See what we have, fine grained soil. जी. फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर ही हमारे पास दो फर्दर यहाँ पे कैटेगरी है, सिल्ट एंड क्ले. एंड इफ वी गो विद द क्ले मिनरल्स, देन वन ऑफ द क्ले मिनरल इज योर मोंटमोरोनाइट. जी. नाउ the positive thing is that in case of the bentonite clay slurry, in bentonite what we have this montmorillonite clay mineral, जी. and this is used for the stabilization of the boreholes. Okay, तो कहीं कहीं आप पहुंच भी रहे थे, ठीक है, पहुंचे थे थोड़ा आंसर के करीब. सो बट दिस आई गिव यू हिंट हियर. आई जस्ट वांट टू नो कि अगर हम कोई पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, एनी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस मोंटमोरोनाइट क्ले मिनरल, although we never want this montmorillonite clay mineral in the soil, and suppose the soil we are using for an engineering purposes, but what is the positive thing? Positive thing is here, this is used here in bentonite clay slurry. What we have, montmorillonite is there, and this जी. bentonite clay slurry is having liquid limit more than 500%, or this is more than 550%. Let me correct myself, this is more than 550%. Liquid limit is kind of the water content. जी. Okay, so this is a positive thing. Okay, positive think of having high content of montmorillonite. अगर मान लो किसी सॉइल में मोंटमोरोनाइट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ऑल्दो जी. हम इसे इंजीनियरिंग पर्पस में यूज नहीं करेंगे, अब उसका भी अगर कहीं आप यूज करना चाहते हो, सपोज यू जस्ट वांट टू यूज, तो कहाँ पे यूज करोगे आप फिर उसको? यू कैन से सर कि जो हमारे पास बेंटोनाइट क्ले स्लरी होती है उसके अंदर जो मोंटमोरोनाइट प्रेजेंट होता है, सो वी आर यूजिंग दैट for the engineering purposes. We are using that for the stabilization of the bore holes. जी. Okay, जैसे हमारे पास व्हाइट सीमेंट के जो बैग होते हैं ना 25 kg वाले, जी. बिल्कुल सेम हमारे पास ये बेंटोनाइट क्ले स्लरी की ये पाउडर फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है. दैट बैग वी हैव. ठीक है. इफेक्टिव स्ट्रेस दैट वाज फाइन. हाउ यू विल कैलकुलेट द पोर वाटर प्रेशर दैट वाज आल्सो फाइन. सो कैपिलरिटी फिनोमिनन, सो लाइक कैपिलरी राइज हो रहा है सॉइल मास के अंदर, व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस. ठीक है. वन थिंग जो आपने यहाँ पे मैथमेटिकल चीज बताई कि हमारा जो वाटर होगा वो टेंशन में जाएगा. जी. ओके, सो जस्ट ट्राई टू गिव मोर एक्सप्लेनेशन. तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर सॉइल की जब हम बात करते हैं तो सॉइल सॉलिड और सॉइल सॉलिड टू सॉइल सॉलिड के बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं, तो यहाँ पे यही वॉइड्स होगा जो एक तरह से यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करेगा. फाइन. व्हेन वाटर इज, जस्ट थिंक प्रैक्टिकली मनीष, जी. just think just like in civil engineer, when water is climbing up, जब पानी ऊपर चढ़ रहा है तो what will happen to the soil solid? ये soil solid को नीचे प्रेस करेगा. जैसे मान लो ये लैडर है, आप लैडर पे पांव रख के ऊपर जा रहे हो, तो आप तो ऊपर जा रहे हो लेकिन उसकी चीज को तो आप नीचे पुश कर रहे हो ना. सेम वाटर इज डूइंग हियर. व्हाट इज हैपनिंग? तो सॉइल सॉलिड और ज्यादा पास पास आते हैं. पास पास आने का मतलब क्या होगा? वो डेंसिफाइड हो रहा है सॉइल, इट मींस इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है. अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा और परेशान कर सकता है इंटरव्यूअर. ही एंड शी मे आस्क यू कि आप कैपिलरिटी फिनोमिनन के कोई एडवर्स इफेक्ट बताओ. तो आपने नाम सुना होगा जैसे फ्रॉस्ट हीव होता है और फ्रॉस्ट बॉयल भी होता है. ये कैपिलरिटी फिनोमिनन के दो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट है. फाइन. क्या होता है ये सी, ये जैसे ग्राउंड सरफेस है जी. ओके, और ये यहाँ पे सॉइल, मान लो यहाँ पे मेरा ग्राउंड वाटर टेबल, GWT इज द ग्राउंड वाटर टेबल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ग्राउंड वाटर टेबल से वाटर मेरा राइज कर रहा है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, तो यहाँ वाला जो सॉइल होगा पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाएगा. जी. क्लियर. अब मान लो टेम्परेचर मेरा बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है, नेगेटिव में चला गया. व्हाट विल हैपन? द वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास मे फ्रीज. जी. अब फ्रीज हो जाएगा. आपको पता है, आपको क्या पता है कि जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में कुछ अलग वॉल्यूम पोज करेगा और सॉलिड स्टेट में दैट इज आइस फॉर्म में कुछ अलग वॉल्यूम पोज करेगा. जी. और सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम ज्यादा ही होता है. ज्यादा होता है. ज्यादा होने से क्या होगा? वो वॉल्यूम बढ़ा रहा होगा तो यहाँ पे जो सॉइल होगी ना वो ऊपर उठने की कोशिश कर रही होगी, हीविंग होगा. ओके. और जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, अब जो यहाँ पे हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ है और फिर से वो वाटर मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो सॉइल क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी. तो फ्रॉस्ट हीव और फ्रॉस्ट बॉयल ये दो डिसएडवांटेज है.
ओके ठीक ठीक है। है सर।